In the name of Allah, who is most gracious and most merciful. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, today we are going to study chapter number 2 of our chemistry, is matter around us pure. In our earlier chapter, we have learned about the matter. Matter, anything that has mass and volume is called matter, or we can say anything that has mass and volume or occupies space, that's the same thing, that is called matter. Is anything there which is not a matter? Is anything there that is not a matter? Just imagine. Yes, there we see idea, emotion, anger, honesty. These all are not matter. About matter, we have studied this physical classification. That is, matter is of three types on the basis of physical properties. That is solid, liquid, gas. Just I will example. If we see ice, ice is a solid. Water, it is a liquid. Water vapor, it is a gas. The students, in our day-to-day life, we consume a number of things, just like milk, ghee, sugar, water, rice, common salt, juice, etc. etc. How do we know these substances are pure? As for a common man, pure means no adulteration. Pure means no adulteration, in which nothing has been adulterated. Now, for a scientist, pure does not mean that. Pure means a substance which is made of only one type of matter or only one type of particles. So, if we examine sugar under a microscope, we find that the particles of sugar are the same. Therefore, sugar is the pure substance. On the other hand, if we examine the soil under the soil particles under a microscope, we see the soil is composed of or made up of different types, different kinds of particles. Therefore, the soil is not a pure substance, but it is a impure substance, or we can call it mixture. We can call it mixture. Thus, we will say that on the basis of chemical properties or on the basis of chemical classification, matter is of two types. One is pure substance and other is mixture. Now, first we will study about the pure substance. A pure substance may also be defined as a material which contains only one kind of atoms or molecules. Yeah, I have written the definition of pure substance. A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. These particles may be atoms or molecules. For example, iron, water. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ये सारा मैटर है ये किनका बना है, ये स्मॉलेस्ट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है बेटा. मगर पहले चैप्टर में हमने उन पार्टिकल्स का नाम नहीं बताया है बेटा. अलबत्ता इस चैप्टर में उन पार्टिकल्स को हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं. एटम्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में ब्रीफली पढ़ेंगे. फिलहाल आप याद रखिए जो सारा मैटर इस दुनिया में है ये किन किन का बना है, एक एटम्स का बना है और मॉलिक्यूल्स का बना है बेटा. आप देखिए प्योर सबस्टेंस. प्योर सबस्टेंस हम उस सबस्टेंस को कहते हैं जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स मौजूद हो. ये पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं बेटा. हमने देख लिया एग्जाम्पल आयरन. अगर हम आयरन के एग्जाम्पल देखें बेटा, जो अब ये देखो ये है आयरन रॉड. अगर हम देखेंगे ये जो आयरन रॉड है ये सिर्फ बनी है किनकी, सिर्फ बनी है बेटा
आयरन एटम्स की सो जब वे सिर्फ बनी है किसकी, आयरन एटम्स की बनी है बेटा, सो हम कहेंगे दिस आयरन इज ए प्योर सबस्टेंस। इसी तरह हम वाटर की एग्जांपल लेंगे। जो ये वाटर है बेटा, ये किन किन पार्टिकल्स का बना है बेटा, ये बना है H2O पार्टिकल्स का, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O पार्टिकल्स जिसको हम H2O को हम ये है मॉलिक्यूल बेटा, H2O मॉलिक्यूल्स का बना है ये वाटर। सो हम कहेंगे जो ये वाटर है इट इज ए प्योर सबस्टेंस। इसी तरह हम बाकी लेंगे गोल्ड लेंगे बेटा, दैट इज आल्सो ए प्योर सबस्टेंस बिकॉज इट इज मेड ऑफ ओनली gold particles. Yeah, if we take pure carbon dioxide, it is also a pure substance because it is made up of only one kind of molecule. Here I will add one thing, molecule हम उस केमिकल स्पीसीज को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा एटम्स का बना हो बेटा। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो ये आयरन है या वाटर है, इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं किन में, स्मॉलर सबस्टेंसेस में, बाय एनी फिजिकल मेथड। फिजिकल में लाइक फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, इवापोरेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो बेटा मैं इस वाटर की एग्जांपल लेता हूं बेटा। जो ये वाटर है ये इन दो चीजों का बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है बेटा। इस वाटर को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं किस में, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में, किससे, बाय एनी फिजिकल मेथड। सो वी से दैट द प्योर सबस्टेंस can't be separated into simpler substances by any physical method। देखिए बेटा अभी मैंने कहा जो ये वाटर है बेटा ये दो एलिमेंट्स का बना है, एक है हाइड्रोजन दूसरा है ऑक्सीजन। इनको हम कहेंगे दीज आर द constituents or components of the water। Now we see that the pure substance is made up of only one kind of atoms or molecules। So we can now classify the pure substance into two types, one is element and another is compound। हमने अभी देखा जो ये प्योर सबस्टेंस है ये या तो एटम्स का बना होगा या मॉलिक्यूल्स का बना होगा। दैट मीन्स इसके फिर कितने टाइप्स है, दो, एक है एलिमेंट दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट हम किससे कहते हैं बेटा, एलिमेंट हम उस प्योर सबस्टेंस को कहेंगे। फर्स्ट ये क्या है, प्योर सबस्टेंस जो बना हो ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, जो एक ही किस्म के एटम्स का बना हो उसको हम कहेंगे बेटा एलिमेंट। एलिमेंट हसा गो स प्योर सबस्टेंस यस बनियमच आसे अके किस्म केन एटमन हिंज। नाउ we will see the definition of element। An element is a pure substance which is made up of only one kind of atoms। Also it can't be splitted into two or more substances by any chemical means। Example iron test। We have seen एलिमेंट हम उस प्योर सबस्टेंस को बोलते हैं बेटा जो एक ही किस्म के एटम्स का बना हो। इतना ही नहीं, जो एलिमेंट है इसको हम किसी भी केमिकल मीन्स या फिजिकल मीन्स से ब्रेक नहीं स्प्लिट नहीं कर सकते हैं किन में, सिंपल सबस्टेंसेस में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं आयरन जिसकी सिंबल है Fe, ऑक्सीजन इसकी सिंबल हो नाइट्रोजन N, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, कॉपर Cu, सोडियम Na। ये सभी क्या है बेटा, ये सभी एलिमेंट्स है। क्योंकि why they are elements? Because they all are made up of only one kind of atoms। Just we see in case of iron it is made up of only iron atoms। In case of oxygen it is made up of only oxygen atoms। आप में से किसी ने लिखा होगा O2 बेटा, ये O2 क्या है बेटा,
it is also an element because it is made up of only one kind of atoms, that is O and O. So yeah, we have seen Cl2, that is also an element because it is made up of only one kind of atoms. Now we will see the definition of a compound. Compound: a substance composed of two or more elements chemically combined in a fixed proportion. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, एटसेट्रा एटसेट्रा. देखिए बेटा, कंपाउंड हम उस प्योर सबस्टेंस को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना हो, मगर ये एलिमेंट्स क्या हो, they should combine chemically, that means there should be a reaction between these elements and also in a fixed ratio. I will clear it by this example. If we see water, its formula is H2O. That means whenever we talk of water, yel ki kun saat is water कथ करो, यह हमेशा बनियोमुत दोन हाइड्रोजन हुंद अख ऑक्सीजनुक. यह हेक न जहन ति पॉसिबल आसित कि वाटर मॉलिक्यूल आइस बनियोमुत त्रेन हाइड्रोजन हुंद तो अख ऑक्सीजनुक. इसलिए यो गो कि यल ति हसा अख कंपाउंड बनान छ गोबुर, अत मज आसान रेशियो या प्रपोर्शन बिटवीन द एलिमेंट्स, यह फिक्सड आसान. अत मुतलिक करो ब्रीफली कथ ब्रो कुन हसा गोबर हसा गो इससे नाम सारी सबस्टेंस, चाहे कार्बन डाइसल्फाइड चो, वाटर चो, कार्बन डाइऑक्साइड चो, कॉपर सल्फेट चो, पोटेशियम परमैंगनेट चो, एटसेट्रा. इम सारी हसा चो गोबर क्या कंपाउंड्स, तिकाज इम च बनेमित अके किस्म केन कमन हिंद, इम च बनेमित गोबर अके किस्म केन मॉलिक्यूलन हिंद. क्या बनेमित यम अके किस्म केन मॉलिक्यूलन, नम च बनेमित अके एलिमेंट बनेमित अके किस्म केन एटमन हिंद. यस प्योर सबस्टेंस आसान, यह आसान यूनिफॉर्म या होमोजीनियस थ्रू आउट, यानी कि अमिच कंपोजिशन प्रथ कुन जाए सेम. अगर फॉर एग्जांपल वो निमो वाटरस मज अकिस जाए एच कंसंट्रेशन ज्यादा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम कह, तिकाज यम प्योर सबस्टेंस आसान गोबर अस वुच कि इम आसान बनेमित अके किस्म केन पार्टिकलन हिंद हसा गोबर हसा. इसलिए हसा इम हेकोक न पान वन, इम पार्टिकल्स हेकोक न पान वन सेपरेट करित कह कुन ति फिजिकल या कुन ति फिजिकल मेथड सत हसा गोबर. अम पत दपान हसा इस प्योर सबस्टेंस मे वन प्योर सबस्टेंस कॉपर सल्फेट. इस कॉपर सल्फेट या वो पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम कार्बोनेट गोबर, इम आसान बनेमित गोबर मॉलिक्यूलन हिंद कह, बल्कि इम आसान बनेमित गोबर कमन हिंद आयन्सन हिंद. फॉर एग्जांपल वो मे कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट आसान बनियोमुत मॉलिक्यूलन हिंद कह, समन गोबर आयन हिंद. अत मज प्रेजेंट गोबर Cu2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव. इमन वन हसा गोबर इम हसा गई आयन्स. फिलहाल थो तुम गोट याद, अत आयन्स मुतलिक करो ब्रीफली डिस्कस नयस वीडियोस मज. So I hope you have understood the meaning of the pure substance, what is meant by pure substance and its types. In our next